Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. In this video, I'm going to talk about OICL exam. The recruitment was announced yesterday and today I'm going to discuss the exam pattern and expected syllabus of this recruitment in detail. First of all, you can fill the application form from 21st of March to 12th of April. Tentative exam dates are in May or June 2024. There are 20 vacancies for the legal stream. Now coming to your eligibility. You should be a graduate in law with minimum 60% marks. Cut-off date to possess the mark sheets degree certificate is 31st of December 2023. Your age should be between 21 to 30 years as on 31st of December 2023. Let's look at the exam pattern. There is prelims, mains and an interview. Phase 1, which is prelims, has QRE, quant, reasoning, English. There is sectional cutoff, there is sectional timing. Total paper is of 100 marks. This pattern is exactly similar to other recruitments by insurance agencies. कुछ महीने पहले NIACL का एग्जाम हुआ था, उसका भी एग्जैक्ट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न था. In NIACL prelims, this was the cutoff. For prelims, English language की sectional cutoff 11.75 थी, reasoning की 2.25, quantitative aptitude की 3 and overall cutoff was 44.75. अभी NICL EO के एग्जाम की कट ऑफ अभी नहीं पता है, so that will also give you a better picture of the expected cutoff for OICL prelims exam. अब आते हैं मेंस पर. मेंस में आपके दो पेपर हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव. Objective paper is of 2.5 hours. It is of 200 marks and these 5 subjects are present. Reasoning, English, GA, quantitative aptitude and specialized subject. Descriptive writing भी है. Descriptive is only qualifying. Here there are 2 questions. 30 marks का पेपर है. 10 marks का letter writing and 20 marks का essay है. Then phase 3 is interview. Interview में 3 times candidates will be called, 3 times the number of vacancies. The weightage of phase 2 and interview is 80:20 and the final selection will be based on the consolidated marks of mains examination and interview. Mains examination का सिर्फ objective test ही count होगा, descriptive is only qualifying. Now coming to your syllabus, this is the syllabus. English में इस type के questions आते हैं, आपको grammar strong करनी है and then you can expect questions from reading comprehension, para jumbles, para completion, vocabulary, error spotting, sentence correction, closed text, rearrangement of sentences, match the columns, fillers. Then in reasoning you can expect questions from all these areas. Mostly 40 questions हैं, तो आपको 4 to 5 puzzle seating arrangements देखने को मिल सकते हैं. 2-3 will be easy to moderate level, 2 can be a little bit trickier than moderate. तो आप puzzle seating arrangements अच्छे से कर लेना. आपको 16 to 20 questions इसी एरिया से मिल सकते हैं. Then you have syllogisms, input, output, direction, distance. Then there is ranking, there is common sense reasoning. So all of this is in your reasoning syllabus. Now coming to your general awareness and quantitative aptitude. In general awareness, current affairs is most important. Recent 4-5 months current affairs is the most important one. Then economic, banking, finance related current affairs. Then information or any important circulars of regulatory bodies, RBI, IRD, SEBI. Banking, insurance terms को देख लेना. Financial capital market के बारे में पता होना चाहिए. Insurance market के बारे में. Types of insurance you should be knowing of and about various insurance agencies. NIACL, UIIC, OICL, NICL इन सब के बारे में एक बार देख लेना. Coming to your quant, many law graduates fear quant. In any exam in which quant is a part. For example, here in prelims there are 35 questions and in mains there are 40 questions from quant. तो अगर आप 4-5 topics कर लो, which are quadratic equation, number series, then you have DI and Caseley DI. तो लगभग आप 40 to 50% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. सो 35 में से आपको 16-17 क्वेश्चंस इन्हीं 4 टॉपिक में से मिल जाएंगे. सिमिलरली मीन्स में 40 में से 17-18 क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से मिल जाएंगे. सो बी प्रिपेयर्ड विद दीज एरियाज. देन इफ यू हैव मोर टाइम, गो फॉर रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप एंड एजेस. अलजेब्रा करने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चंस कम आते हैं. एंड अदर टॉपिक्स यू कैन डू इफ यू हैव टाइम. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, DI, केसले DI, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, एजेस, इन सबको कर लीजिए एंड यू विल बी एबल टू क्लियर सेक्शनल कट ऑफ्स और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे. और उसके बाद बाकी मार्क्स आप बाकी एरिया से कवर करने की कोशिश कीजिए. देन कमिंग टू योर लॉ पार्ट, IPC, CRPC, एविडेंस, ये सब आपको ओल्ड एक्ट्स भी पढ़ने हैं और न्यू एक्ट्स भी पढ़ने हैं. न्यू एक्ट्स में ज़्यादा ध्यान रखना ऑफ द अमेंडेड प्रोविजंस एंड द न्यूली एडेड प्रोविजंस. Then CPC, Constitution, Contract Act, Specific Relief, Arbitration, Transfer Property Limitation, RTI, Law of Torts, Consumer Protection, IT Act, Companies, IBC, LLP, Insurance, IRDA, General Insurance, Business Nationalization, Motor Vehicle Registration and RDB Act. These are important
which are included in the law syllabus. इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके NIACL के एग्जाम में भी आए थे और UIIC के एग्जाम में भी. NIACL का एग्जाम पैटर्न एग्जैक्टली सेम था like OICL, और NIACL में questions came from all these areas. These were the number of questions from various subjects. यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं. दो एक्ट थे, मेजोरिटी एक्ट एंड गार्डियन एंड वॉर्ड्स एक्ट. आई विल नॉट रिकमेंड टू स्टडी दीज. अब 2-3 क्वेश्चंस हो सकता है किसी भी एक्ट से उठकर आ जाए विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. बाकी सभी आपके कॉमन और इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, सो बी प्रिपेयर्ड विद देम. फेमा भी पढ़ लीजिएगा. देन यू हैव सेबी एक्ट, RTI, आर्बिट्रेशन, एविडेंस लिमिटेशन, पार्टनरशिप. इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को रेफर करना होगा एंड यू कैन फाइंड दैट प्रीवियस ईयर पेपर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. वहां से आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस NIACL EO मेंस में आए थे. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट UIIC AO रिटन एग्जाम, एक ही एग्जाम था, प्रीलिम्स मेंस नहीं था. यहाँ पर लीगल का सिलेबस डिफाइंड था एंड लीगल के सिलेबस में दीज वर द एक्ट्स फ्रॉम विच द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट केम. एक क्वेश्चन GA का था, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के बारे में पूछा हुआ था. अदर देन दैट दीज वर द क्वेश्चंस. यहाँ पर भी किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड PYP को डाउनलोड करके देख सकते हैं. दैट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट in OICL and accordingly prepare for the various acts in OICL. Keeping this in mind, you can start your preparation. This is the most probable syllabus. अगर OICL खुद ही syllabus release करते हैं, that will be in your benefit. Otherwise, these all are the areas that you have to prepare. In order to answer any of your queries with respect to OICL EO exam, I am conducting a workshop on 14th of March at 6 p.m. You can join this workshop, you can ask your queries, we can also discuss the preparation strategy, how to manage time, how to divide time, what all to expect, what cutoffs to expect, what kind of questions to expect. Everything we'll be discussing in this free workshop. You will have to register for this workshop. The registration link is present in the description below. That's all for now. We at iExamB help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.